हम जहाँ आते हैं कि हम लोग सर्टेनिटी क्रिएट करते हैं और वो सर्टेनिटी क्रिएट करने से ये 4 ट्रांजैक्शंस फैसिलिटेट। एक बार हम लोगों ने गारंटी दे दी, देन इट द ट्रांजैक्शन इज स्टार्टेड। एक पुराने घर का ट्रांजैक्शन, एक नए घर का ट्रांजैक्शन, फिर जब ये पुराना घर बिकेगा। बट इस प्रोसेस में डेवलपर और चैनल पार्टनर्स दोनों को हम साथ में लेके चलें। सो दैट इज, यू आर एब्सोल्युटली राइट, वी आर फैसिलिटेटिंग 3 to 4 transactions or rather helping 4 or 5 people in the ecosystem with one transaction. Welcome to the very first episode of Sleepless Rangers, which is brought to you in association with Relevance. I can't thank you enough for the super response to the teaser we have got. इतने सारे Proptech founders ने हमें reach out किया, हमें messages किया और कहा कि यार शायद हमने एक सही कदम उठाया। आप सबके हम शुक्रगुजार हैं। आज के जो गेस्ट हमारे साथ हैं, do you know, इनका वादा है कि आपके करंट घर को सेल करने की जिम्मेदारी इनकी है। उसके बदले में वो दिलाते हैं आपको आपका नया घर। और इस होम बाइंग जर्नी में आपकी सारी जरूरतें, जैसे कि डाउन पेमेंट के लिए अगर पैसे कम पड़ रहे हैं, होम लोन्स, एंड आपके साथ आपके नए घर की खोज, पूरी की पूरी जर्नी में आपका हाथ पकड़ के आपको आपके नए घर तक पहुंचाते हैं। जी हाँ, तो फिर जानते हैं क्या वजह थी कि इन्होंने इतना बड़ा जिम्मा अपने सर उठा लिया। हाउ हैज बीन हिज जर्नी, क्या तकलीफें आई हैं इनको इस जर्नी में, और रियल एस्टेट में क्या बदलाव लाना चाहते हैं ये। मैंने पर्सनली इस एंजॉय को बहुत एंजॉय किया और साथ साथ बहुत कुछ सीखा भी, एंड आई एम प्रीटी श्योर यू टू विल। सो लेट्स वेलकम Jesal Sanghvi from HomeXchange to the very first episode of Sleepless Rangers. So Jesal, welcome to the Sleepless Rangers. I'm so glad आपको इतने कम नोटिस पे बुलाया और आप आ गए। And I cannot be happier than this कि आज हमारे साथ Jesal यहाँ पर आए हैं, who have been doing something very very amazing. The journey that he has taken, HomeXchange से लेके मेरे काफी खुद के क्वेश्चंस हैं and confusion भी है, और आप कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये हमारी ऑडियंस भी जानना चाहती है। बट उससे पहले I wanted to ask you that what were you doing before that you felt like कि यार ये करना है, HomeXchange बनाना है और कुछ तो डिस्ट्रप्टिव करेंगे। So ये आइडिया कैसे आया, and what was that point where you felt that this is the place and this is the time I can get started? Govind, I have been back in the country for about 12 years. I started my career in the US, where real estate operates very, very differently, right? Right. I came back in the wholesale side, or more the private equity side of the business. And over the years, we've seen that one area where people often do not want to touch India is the real estate investments. Yes, you will see the large investment plays of Brookfield and Blackstone, right? True. But unlike other countries where middle market plays are very, very dominant, whether it's the US or UK or Europe or even other emerging markets, India is untouchable as far as middle market plays go. And primary reason is transparency. People just not very comfortable with how transactions happen here, and they happen. Obviously, everyone has a, but that's one of the reasons why institutional setups have not come. So, always transparency, trust, confidence in the space is something that we've thought about, right? True. I had been on an entrepreneurial journey prior to COVID as well, and as we were kind of going through this journey, given our own backgrounds, it became very interesting with my early shareholders, including Enrock and Oberoi, that the market is going to take a turn where people will need more help in selling and buying homes, right? Already digital was coming on board, but you need something more than that to facilitate transactions. So that's how the journey started. I think the transparency and institutionalization was really in our DNA, and we thought very hard about it. What is the problem that is worth solving in the ecosystem? And it's a problem that actually touches the entire ecosystem, even though it is primarily for consumers. True. It is actually creating an environment where people can deal with certainty when they are making the real estate decisions, right? That's the... So, could you just put a little more highlight and limelight about your previous journey, what you mentioned, कि आपके stakeholders थे, जिनके साथ आपको लगा कि ये ऐसा कुछ करना चाहिए. Sure. What was that journey about? उसमें आप क्या कर रहे थे? And उस जर्नी और इस जर्नी में डिफरेंस क्या है? No, I think having seen the real estate market एक private equity investment के point of view से, we look at, for example, आप देखिए बहुत सारे investments हुए जहाँ
private equity investors have also burned their heads, right? Right. But the fact of the matter is that कहीं ना कहीं वो जो issues है, जैसे आप नॉर्थ में देखिए बहुत सारे इंसॉल्वेंसी केसेस हैं, वो सब इश्यूज कस्टमर को भी टच करते हैं, राइट? सो देयर इज अ लैक ऑफ ट्रस्ट इन द सेक्टर ओवरऑल, राइट? तो मेरा तो सिंपल कहना है कि अगर कोई अगर मैं किसी बिल्डर के साथ काम करना चाहता हूँ, मैं उस बिल्डर के साथ पहले काम करना चाहता हूँ जिसको अपने कस्टमर्स के लिए कह रहे हैं, राइट? सो आई थिंक दैट was not necessarily a big percentage of people. You have 50%, 60, 70% market that depending on the city. So we have been seeing this journey in the market, whether it's on the wholesale side or the institutional side. Right. But we are all two sides of the same coin, right? Absolutely. अगर यहाँ transparency और trust आएगा तो यहाँ भी रहेगा, और अगर यहाँ रहेगा तो यहाँ भी रहेगा, right? So both are connected. So that is one of the journey. Obviously, I had been doing my own angel investing over a period of time. Right. But that was really kind of creating that urge that we need to do something out of the box for a country like this, where we have come with the necessary DNA built in, right? And I think if we can't lend that to the ecosystem, then what's the point of being in the ecosystem? No, absolutely. And so all the young entrepreneurs जो इस एपिसोड देख रहे हैं, आपको पता है कि अगर आपको एक एंजल इन्वेस्टर के पास जाना है तो जैसल is a person that you can approach as well. So feel free. And towards the end, we will share the coordinates for him for reaching out into social media channels. But let's get back. One of my important learnings and feedback to the stakeholders of the industry जिनसे मैंने interact किया है, I've always felt कि यार 2005 के आसपास 2005 और 6 के आसपास 99 acres Magic Bricks इन लोगों ने बहुत ही बढ़िया जर्नी की शुरुआत की. But then कहीं ना कहीं उस जर्नी में they forgot that they have to help the journey in a better manner by hand-holding the customer towards the transaction side. And that is where your journey fascinated me in terms of what you are doing. अब मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ. जो मैंने देखा है guys, होम एक्सचेंज टिपिकली बाकी डेवलपर्स अगर घर बना रहे हैं तो उनको एक कस्टमर को सेल करना है. अगर ब्रोकर्स हैं तो कस्टमर के पास जाते हैं और एक डेवलपर्स के पास ले जा रहे हैं कि वो घर कस्टमर्स को दिला सके. बट होम एक्सचेंज कुछ अलग कर रहा है. What are they really doing? From my understanding, I see Jesal that अगर मुझे घर बेचना है तो मैं आपके पास आता हूँ, आप उस घर को बेचने की गारंटी देते हैं एंड वो घर आप किसी को बेचते भी हैं, यानी कि 2 कस्टमर्स ऑलरेडी हो गए जिनके लिए आपने कुछ बेहतर किया, उनकी लाइफ अच्छी बनाई. एंड देन देयर इज अ रियल एस्टेट डेवलपर जिनकी इन्वेंट्री आपने बेचने में मदद की है. एंड देन ये जो घर जिनकी आपने घर को सेल किया है उनको एक नया घर भी दिया है. Now 4 people, 4 stakeholders into one transaction. Now that is something very very beautiful and fascinating. And I wanted to ask from you, have I got it right, or is there anything that I'm missing? And if I got it right, then tell me that what are the hurdles that you have seen in this space that became a moat also for the business model that you are doing. No, you're absolutely right, Govind. There is one transaction that has a domino effect on the subsequent transactions, right? Absolutely. We have a broken system in the sense that getting that one transaction done itself is a pain point. True. I'll take a few seconds to go back to your comment on the discovery platforms, right? Yes. I mean, I think the way I look at it is that they've done a fantastic job as well, because if they would not have started, we would not have been in this journey. Yeah, and they wouldn't have done this kind of work, then you wouldn't have got the opportunity. That is how I look at it. That उन्होंने काम ही अच्छा नहीं किया इसलिए जैसे I think they have a different role to perform, right? I think they are discovery platforms and they'll continue to have a role in the ecosystem, right? ऐसा नहीं है कि उनका एक look at when we were in 2000, it was so hard. Selling a home was such a localized game. Absolutely. आज अगर 4 लोग अपने घर को लिस्ट करते हैं तो एक 5वें आदमी को पता लगता है कि मुझे भी ये लिस्टिंग करना चाहिए. Otherwise, really information was traveling very slowly. So they are making the information travel very fast. Absolutely. हम लोग भी जब जाके देखते हैं तो हमें भी पता लगता है अच्छा एक बिल्डिंग में कितनी इन्वेंट्री लिस्ट हो रखी है. अगर बहुत ज्यादा इन्वेंट्री लिस्ट हो रखी है, which means supply और demand का गेम आएगा, right? Absolutely. So they do create some of those triggers in the market where people can get the information to make decisions. Now they are not in a position where they can make the transaction happen with certainty. True. क्योंकि वो उनका business model नहीं है. True. They are providing information. They are helping customers connect with channel partners and brokers. And उसके बाद थोड़ा बहुत information देते हैं. And then the transaction may go offline.
True. And that is a service, and that is a good service to have for even brokers, for example, right? बिल्कुल. हम जहाँ आते हैं कि हम लोग सर्टेनिटी क्रिएट करते हैं, और वो सर्टेनिटी क्रिएट करने से ये 4 ट्रांजैक्शंस फैसिलिटेट होते हैं, राइट? एक बार हम लोगों ने गारंटी दे दी, देन द ट्रांजैक्शन स्टार्टेड. True. एक पुराने घर का ट्रांजैक्शन, एक नए घर का ट्रांजैक्शन, फिर जब ये पुराना घर बिकेगा. बट इस प्रोसेस में डेवलपर और चैनल पार्टनर्स दोनों को हम साथ में लेके चल रहे हैं, क्योंकि वी आर वर्किंग विद ब्रोकर्स ऑन बोथ द न्यू होम साइड एज वेल एज ऑन द ओल्ड होम साइड. True. हम ब्रोकर्स के थ्रू ही बेचते हैं बिकॉज वी नो दे हैव अ रोल टू परफॉर्म. वी जस्ट वांट that they do it in a time bound manner, in an incentivized manner and in a manner which is good for the ecosystem. ऐसा नहीं है कि एक साल ले रहे हैं घर बेचने के लिए. तो कहीं ना कहीं कस्टमर एजुकेशन की बात आ जाती है. सो व्हेन वी आर इंस्टीट्यूशनल पीपल, हम लोग एजुकेट कर पाते हैं कस्टमर्स को. वी कैन टेल देम व्हाट इट मीन्स फॉर देम टू गेट आउट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन एंड गेट इनटू अ न्यू होम, राइट? ट्रू. जो कई बार मेरे ख्याल से अनलेस एंड यू हैव अ मैक्रो व्यू ऑन द इंडस्ट्री सब लोग नहीं दे पाते होंगे. बिल्कुल. So that is, you are absolutely right. We are facilitating 3 to 4 transactions, or rather helping 4 or 5 people in the ecosystem with one transaction. So and that is the most fascinating part, Jesal. Now आपने जो जवाब दिया उसमें 2 पार्ट मुझे ऐसे लगे कि I have questions there and I would love to ask. पहला आपने एक वर्ड यूज किया सर्टेनिटी, एंड दूसरा आपने कहा ब्रोकर्स. तो ये दोनों पहलुओं को हम लोग टच करेंगे. पहला क्वेश्चन मेरा सर्टेनिटी को है. तो जो मैंने समझा वो ये है कि आप कस्टमर्स को एक सर्टेनिटी देते हैं कि एक आपका घर है, उसको अगर आपको सेल करना है तो हमारे पास आइए, हम गारंटी लेते हैं, घर हम बेच के देंगे, राइट? सो माय क्वेश्चन टू यू इज हाउ आर यू डूइंग इट इन इंडिया एज अ मार्केट? हाउ डिफिकल्ट अ टास्क इट इज, बिकॉज आई नो दैट आई एम फ्रॉम दिस बैकग्राउंड. ये जो डेटा अवेलेबल है ट्रांजेक्शन की, उसके अंदर बहुत सारे पहलू ऐसे हैं, काफी कैश ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, सारे वाइट ट्रांजैक्शन जो हो रहे हैं वही कैप्चर होते हैं. तो ये जो पूरा वेरिएबल है उसको आप कैसे कैप्चर करते हैं, और हाउ डू यू मेक श्योर दैट देयर इज अ सर्टेनिटी कमिंग? एंड माय सेकंड क्वेश्चन विद द सेम इज कि एज अ कस्टमर अगर मैं आपके पास आया हूं तो एम आई रियली श्योर कि आप मेरा घर बेच के देंगे? अगर मेरा घर आप नहीं बेच पाए तो क्या होगा? श्योर. गोविंद, हमारा जो मॉडल है उसमें हम लोग एक गारंटीड ऑफर देते हैं, राइट? तो सर्टेनिटी तो वहां आ गई. सो वंस यू गेट द गारंटीड ऑफर, दैट ट्रांजैक्शन एंड द कस्टमर एक्सेप्ट्स इट, वो ट्रांजैक्शन आगे बढ़ेगा. उसके बाद रिस्क हमारी है, ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू लीगल एटसेट्रा. तो हम घर बेच रहे हैं मार्केट में, लेकिन वो एक गारंटी के साथ आ रहा है कि ये बिकेगा और इस प्राइस पे बिकेगा. तो हमारा मॉडल उस वे से सर्टेनिटी ऐड करता है. वी आल्सो ऐड सम लिक्विडिटी सो दैट देयर ऑनवर्ड नीड्स कैन स्टार्ट. कैन यू एक्सप्लेन दिस अ लिटिल मोर? तो जैसे अगर एक कस्टमर है जिसका घर का वैल्यू 1 करोड़ है, बिल्कुल, पहले तो हम दोनों एग्री करते हैं कि ये घर का वैल्यू, हमारा ऑफर हम लोग 1 करोड़ का देंगे. ओके. और वो लोग एक नया घर खरीद रहे हैं 2 करोड़ का, राइट? He does not have the confidence to book the new home till he's found some certainty कि ये पुराना घर बिकने वाला है. Yes. And उसमें भी उसको थोड़ी सी लिक्विडिटी की हेल्प चाहिए होती है कि नए घर की पेमेंट शुरू हो जाती है, बिल्कुल. So हम लोग उस घर को इवेल्युएट करके वेरी क्विकली to answer some of your other questions कि हम इसकी प्राइसिंग कैसे करते हैं. We are very entrenched in the market. We have our own proprietary models where we can price it very fast and come out with an offer, and we are building all that knowledge both in our teams as well as in our system, right? Lovely. So the question is whether the customer accepts or not. थोड़ा बहुत एजुकेशन का प्रोसेस होता है. हमेशा से कस्टमर्स ने खाली एक सुना है कि इतना वैल्यू होना चाहिए, राइट? बट द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज कि क्या प्राइस आता है. हम उसको एक ऑफर देते हैं, बिल्कुल. हम उसकी जर्नी पुराने घर की और नए घर की दोनों शुरू कराते हैं. अब वो जब पुराना घर हम मार्केट में बेचते हैं तब हमारे फंड्स वापस आते हैं. लेकिन जैसे इस प्राइस से नीचे ट्रांजैक्शन हुआ, राइट, 1 करोड़ से नीचे, तो वो लॉस हमें बेयर करना है. और अगर प्राइस से ऊपर हुआ तो वो कस्टमर को हम देते हैं, राइट? तो ओके, सो अगर देयर इज एन अपसाइड तो उसका भी बेनिफिट आप कस्टमर को पास ऑन करो. वी आर गिविंग फेयर वैल्यूज टू कस्टमर्स. Market is never one value. It is sometimes a little up, a little down, right? Absolutely. So we allow that, but we are a pure fee-based business. But इस process में क्या होता है कि developer का भी sale हो जाता है. बिल्कुल. But our pricing, our ability to sell, as you said, it's a very hard market. Yeah. But it's a hard market because it's a very fragmented market. You need an institutional, framework within which you can hold all the processes together to drive. India है, बहुत बड़ा population है. हर एक को घर की जरूरत है. At a price, everything sells. Right? Absolutely. Every time we've seen in the market the prices go out of reach of customers, the sales slow down. True. Every time they correct by
what is the right price point? जैसे कि last 2 साल में हमने primary market में देखा है, the sales are through the roof. There's enough demand in this market. True. When you do it in an organized manner, when you do it at the right price point. Absolutely. So to the viewers, I wanted to tell कि काफी सारे डेवलपर्स के साथ मैंने काम किया है, तो एक सबसे बड़ी तकलीफ जो लोगों को होती है वो उनके जो कस्टमर्स हैं काफी टाइम लोन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, और अगर लोन के लिए एलिजिबल हैं और वो आ रहे हैं घर खरीदने का इंटेंट रखते हैं, तो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनका पुराना घर बेच के उनको नया घर खरीदना है, और नए घर खरीदने की लिक्विडिटी की प्रॉब्लम को जैसे आपने सॉल्व किया है, दैट इज अ ग्रेट इनसाइट फॉर मी आल्सो दैट आई विल टेक टुडे, and I believe that's a very wonderful step that you guys are doing, and for all the customers, I believe whenever that you're going to buy a home, you have to sell, you know where to come. Now coming to my second part, जो मैंने कहा जो दूसरा पहलू आपने टच किया था वो ब्रोकर से रिलेटेड था, तो मेरे 2-3 सवाल हैं इधर। सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरा ये है कि आपकी जर्नी में आपको आज करेंटली ऐसा लगता है कि ब्रोकर्स आर प्लेइंग अ रोल इन दिस करेंट जर्नी, और इफ नॉट टुडे देन आर दे गोना प्ले एनी रोल टुमारो? The second question that I wanted to ask is, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने ऑब्जर्व किया कि बाहर की जो कंट्रीज में वहाँ पे एजेंट्स हुए या ब्रोकर्स हुए, उनका रोल बहुत बड़ा है सेकेंडरी मार्केट में, बट इंडिया थोड़ा सा अलग है। क्या आप उससे सहमत हैं? व्हाट इज योर व्यू पॉइंट ऑन द सेम? No, Govind, brokers तो हमारे इकोसिस्टम में बहुत पहले से है, especially when you look at the older cities of Delhi, Bangalore, Calcutta, transactions happen primarily through brokers. True. Now, I think what you're trying to say is that they are not very organized as a community as much on the secondary market as they are in markets like the US, where multiple listing services, how brokers work with customers on an exclusive basis, and then transparency is very much there. Right. Problem I think India में ही है कि it's a very old industry. It's a very fragmented industry, and data was not very easily available earlier, right? Right. क्योंकि the challenges that you mentioned. Yeah. Brokers तो है इंडिया में, and we are working with them today. True. We are not planning to work with them in the future. We think they have a very important role, and I think when they get an organized framework like ours to work with, they are also happier working because they know what they need to do, in how much time they need to do, and price. Obviously, we have a price discovery mechanism where we take the feedback even when we are giving out the offer. जैसे कार ट्रेड मॉडल में होता है कि डीलर्स गिव द bid prices on the cars, right? Yes. हम लोग we take the sense of that. So brokers find it easier to actually work with us when we are selling the old home, right? Right. And they could be a source of leads for us. We work with them on the primary home side where their customers' new home journey is not getting done because of the old home. Right. So brokers are very, very important, and we'll continue to work with them. I think you will see, I won't say consolidation, but more organization on the broker side. अपने तरीके से उन्होंने वो भी किया है, जब WhatsApp जैसे टूल्स आए तो they have all these multiple listing services नहीं है, तो वो तो है ही है कि they are interacting in the ecosystem. True. The question is whether customers find the trust and transparency with channel partners, and I think if we get them to be a little more organized, which many people are, but I think it's a large industry. True. And so धीरे धीरे वो हो रहा है रेरा के साथ. Most brokers are also getting more and more formalized, right? True. When you go to cities like Bangalore, there are already very large institutional brokers. Absolutely. So it all depends on where you started. So Bangalore is a new city, but Bombay is an old city, so it may take, but the journey is already on its way, right? Absolutely. So जो भी एपिसोड देख रहे हैं उनको ये जानना जरूरी है, जो जैसे ने कहा प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, तो मैं आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। जब भी एक रियल एस्टेट डेवलपर एक अपना नया घर बनाता है और उसको जब आप खरीदते हैं, तो वो एक प्राइमरी मार्केट का ट्रांजैक्शन कहलाता है, और जब भी आपका घर आपको किसी और को बेचना है, वो जो मार्केट है और वो जो ट्रांजैक्शन है वो सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शन कहलाता है। नाउ कमिंग बैक टू यू जैसल, मेरा जो दूसरा क्वेश्चन था ब्रोकर से रिलेटेड, वो मेरी क्यूरियोसिटी थी ये जानने के लिए कि करेंटली ब्रोकर्स इंडिया में प्राइमरी मार्केट पे बहुत फोकस कर रहे हैं। जो मेरा कन्वर्सेशन उनके साथ रहता है वो उनका पूरा फोकस बड़े ब्रोकर्स का हमेशा रहता है कि हम कौन सा नया लॉन्च आ रहा है वहां पे फोकस करते हैं और कस्टमर्स को वहां पे घर दिलवाते हैं, जबकि जो रियल चैलेंज है और जो रियल प्रॉब्लम है शायद वो है सेकेंडरी मार्केट में, जहां पे कोई बड़ा प्लेयर शायद अवेलेबल अभी तक नहीं था। अभी आप लोग जो कर रहे हो दैट इज वेरी फिनोमिनल, बट इससे पहले शायद किसी ने इस चीज को एड्रेस भी नहीं किया है एक अच्छे स्केल पे। सो डू यू थिंक फ्यूचर में ब्रोकर्स, more organized brokers are going to be operating in this space, maybe aligning with you, maybe aligning with other parties or doing something on their own? Do you see कि future में जो ये प्राइमरी मार्केट का जो उनका फोकस है वो बदल के सेकेंडरी की तरफ ज्यादा आएगा, और अगर आएगा तो आज ऐसे क्या चैलेंजेस हैं उनके लिए कि वो सेकेंडरी पे इतना फोकस नहीं करते? I think
brokers also look for a formal counterparty, right? True. तो जब developers के साथ काम करते हैं उनकी fees well defined है, right? Absolutely. Decision maker developer है एक जो well defined है जिसको मालूम है कि इस price पे बेचना है तो बेचना है. बिल्कुल. When brokers are working in the secondary market, they are also dealing with people's emotion with the home, right? True. So it's a much more difficult journey. ऐसा नहीं है कि brokers always they have a good intent. They obviously out there they have a role to play, but primary is an easier place for them to operate because decision making is a little more. अच्छा नया घर खरीदना है तो खरीदना है customer को वो भी ज़्यादा. But in the old home you have to. I would even say that the incentivization for brokers would be a little lower vis-a-vis the effort and the fees, right? Okay. So it is a different space. पहले सेकेंडरी मार्केट ही ज्यादा होता था, इतनी नई बिल्डिंग बनती नहीं थी. बिल्कुल. तो आजकल इतना ग्रोथ आ गया, नई बिल्डिंग बन रही है तो they can also focus their efforts. Having said that, you have players like Proptech that do focus on the resale market as well on the other side, right? But then they are an ecosystem where they are dealing with customers on both sides. Right. I'm sure Square Yards also operates in both the spaces. So it's not true that brokers do not operate in the secondary market. But a big chunk of the market operates in a very in a fragmented kind of a way, in a very fragmented and localized kind of a space. So what doesn't come up is a very transparent and an institutional flavor to the secondary market. Right? Shayad it is I don't think it is the doing of the brokers. It's just that the ecosystem has moved in that way, right? And maybe in the years to come, we'll also have some kind of regulation that can self-regulation that can actually help the space more, right? True. आज वो शायद absent है. Right? Absolutely. I totally agree with you. So, Jesal, now I have very interesting two questions. You can take your time to explain it if you need, but it is very important for our customers to understand these two phenomena. पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि अगर मैं कस्टमर हूँ, मेरे पास मेरा घर है, मुझे एक नया घर खरीदना है एंड मैंने होम एक्सचेंज का ऐड देखा, मैंने उसमें एक अपनी लीड डाल दी. नाउ अब मेरे साथ क्या होगा? कैन यू टेक मी थ्रू द हैंड होल्डिंग जर्नी दैट यू विल टेक मी ऑन? गोविंद, हमें लीड्स काफ़ी सोर्सेज से आती है, हम भी जनरेट करते हैं. कस्टमर्स जिन्होंने हमारे बारे में सुना है वो आजकल हमारे पास ऑर्गेनिकली भी आते हैं. ब्रोकर्स भी आजकल हमें लीड्स भेज रहे हैं. एंड किसी भी सोर्स से अगर हमारे पास एक लीड आती है तो हमारे जर्नी, उसकी क्या जर्नी रहेगी हमारे सिस्टम में जरा सा एक्सप्लेन करता हूँ. बिल्कुल. ठीक है. सबसे पहले एक लीड आती है तो वो हमारे कस्टमर केयर डिपार्टमेंट के पास आती है. हमारा एक सर्टेन क्राइटेरिया है जिसके अंदर हम उस लीड को इवेल्युएट करते हैं बहुत क्विकली. हमारे पास टेक टूल्स भी, अगर हमारे पास वो ऑनलाइन आएगा तो ऑटोमेटिकली वो फनलिंग हो जाती है बिकॉज हमने वहाँ एक जर्नी बना रखी है कस्टमर के लिए. तो बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस ही आंसर. बट लेट्स से कि हमारे पास ये लीड आ गई है और कस्टमर केयर हैज कॉल्ड अप दैट कस्टमर, तो वो उसको कुछ सवाल पूछेंगे उसके एग्जिस्टिंग घर के बारे में और उसको नया घर कहाँ खरीदना है. बिल्कुल. ऑब्वियसली आज हम बैंगलोर और बॉम्बे में ही ऑपरेट कर रहे हैं, ग्रेटर बॉम्बे में, मुंबई में. और हम लोग वो लोकेशन आइडेंटिफाई करके फिर उसके घर के बारे में, करंट घर के बारे में उसको कुछ सवाल पूछेंगे. वंस वी नो कि ये घर हमारे क्राइटेरिया में फिट होता है, then he will get a call from a relationship manager. Okay. Our relationship manager will ask him a few more questions about his house. उसकी और डिटेल्स लेके फिर एक होम विजिट सेटअप होती है. Okay. उस होम विजिट में हमारे जो होम एक्सपर्ट्स हैं वो जाके उसके घर की डिटेल इंस्पेक्शन करेंगे. Right. और कस्टमर को एक टाइमलाइन देंगे कि इतने दिनों में हम आपके पास वापस आएंगे. उसकी और कोई अंडरस्टैंडिंग, उसके सवाल है उसको आंसर करके वी मूव फॉरवर्ड जर्नी. फिर हमारी प्रोप्राइटरी जो इंटेलिजेंस है हम उसको यूज़ करके उसके घर की प्राइसिंग करते हैं. उस घर की प्राइसिंग करके हम उसको लगभग 5 वर्किंग डे में एक ऑफर डिलीवर करते हैं. इसमें ऑब्वियसली भी द रिलेशनशिप मैनेजर इज होल्डिंग दी कस्टमर रिलेशनशिप टुगेदर और उसकी नए घर की क्या जर्नी है उसके भी हम लोग प्रोसेस से शुरू कर देते हैं. स्पेशली वी अंडरस्टैंड कि इसका पुराना घर हम डेफिनेटली हेल्प कर सकते हैं. वी हैव क्राइटेरिया लाइक अगर 50 साल 40 साल पुराना है तो हम नहीं देख रहे हैं, या अगर उसकी लीगैलिटी नहीं है घर की, ओसी नहीं है तो हम अभी नहीं टच करें उन घरों को. वी वांट टू गो फॉर लीगली मार्केटेबल होम्स. अब जैसे हमने एक प्राइस निकाला कि उसको 1 करोड़ का हमें ऑफर देना है. ओके. तो हम कस्टमर के साथ बैठेंगे, उसको एजुकेट करेंगे कि वाई वी हैव कम अप विद दिस प्राइस. समटाइम्स दे हैव अ वेरी अनयूजुअल एक्सपेक्टेशन क्वाइट ऑफन बिकॉज क्या है, बॉम्बे मार्केट वॉलेटाइल है, कोविड के पहले से प्राइसेस थोड़े करेक्ट हो गए
तो एक हमेशा किसी की एक इमोशनल एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरा घर 1.3 करोड़ में बिके, 1.2 करोड़ में, बट हम लोग वी ट्राई एंड एक्सप्लेन टू द कस्टमर डेटा दिखा के कि हाउ दिस प्राइस इज व्हाट इट इज, राइट। फिर हम उसको उसके नए घर की जर्नी के बारे में पूछते हैं, और अगर उसका नया घर लेट्स से आइडेंटिफाई हुआ है कि 1.7 करोड़ में उसको एक डेवलपर के यहाँ खरीदना है, हमारे पार्टनर डेवलपर के यहाँ, सो वी स्टार्ट दैट प्रोसेस आल्सो, बट वी गिव हिम द ऑफर, इफ ही एक्सेप्ट्स इट, राइट, हम उसके साथ डॉक्यूमेंटेशन करते हैं जिसमें हम उसको ये गारंटीड ऑफर देते हैं, उसका एक पेमेंट प्लान भी बनाते हैं ताकि वो जो नए घर की बुकिंग कर रहा है, right, उसके साथ उसकी जर्नी शुरू हो जाए। हम लोगों को डेवलपर्स के साथ भी काम करना है, तो वी मेक श्योर दैट बोथ द ट्रांजैक्शंस आर मूविंग टुगेदर। गॉट इट। फिर हम उसके घर की तरफ फोकस करते हैं, उसका लीगल चेक करके वी स्टार्ट द फंडिंग। अब जैसे हमने 3 महीने के अंदर हमने एफर्ट्स किए टू मार्केट इट, राइट। हमारे पास अगर बायर नहीं आया 3 महीने में या 4 महीने में, जो भी हमारा उसके साथ एग्रीमेंट है, तो देन ही हैज टू कंसीडर दैट द सेल इज डन एट द प्राइस दैट वी डन gave, right? Okay. So we are the eventual buyer. Right? Okay. We are the buyer even when we are funding it, but we obviously want to see we are a warehousing of the. हम लोग थोड़े टाइम के लिए वो रिस्क हमारे सर पे ले रहे हैं. Right. अगर बायर नहीं मिला तो वो रिस्क हमारे साथ है. अगर 1 करोड़ से कम में मिला प्राइस, बायर मिल गया, तो भी रिस्क हमारे साथ है. हम डिफरेंस जो है, जो प्राइस अच्छी होती है मार्केट में और हमारे ऑफर प्राइस में, वो हम कवर करते हैं. राइट. अगर लेट्स से 1 करोड़ 5 लाख में बायर मिला, तो हम कस्टमर को वो अपसाइड देते हैं, राइट, पूरा का पूरा. ये कस्टमर क्या घर है एंड ये कस्टमर को हम अपसाइड देते हैं. तो 5 लाख जो ऊपर क्या है वो सारे कस्टमर के पास या कस्टमर को दे देते हैं, राइट. हमारा जो भी फी अरेंजमेंट है कस्टमर के साथ हम ट्रांसपेरेंटली पहले ही डिस्कस कर लेते हैं. इट इज नॉट अ वेरी अनरीजनेबल फी फॉर द काइंड ऑफ सर्विस दैट वी प्रोवाइड. वी आर नॉट जस्ट टेकिंग अ चांस कि बिका तो बिका, नहीं बिका तो वी आर putting our. Would you mind shedding some light कि क्या है, अगर customers अगर देख रहे हैं वीडियो को तो उनको पता चले कि what to expect out of HomeXchange as of. So typically क्या होता है कि अगर वो डेवलपर के अपग्रेड कर रहे होते हैं हमारे थ्रू, yes, तो हमारी फीस कस्टमर्स के लिए 2% होती है the old home value, right? That is what we have currently structured, and I think देखा जाए तो उस पर फिर हम सब कॉस्ट मीट करते हैं, इंक्लूडिंग द सेलिंग ऑफ द ओल्ड होम, इंक्लूडिंग चैनल पार्टनर कॉस्ट. तो कस्टमर को और कुछ पे नहीं करना है. So to get the liquidity, to get a guarantee, that's a very very reasonably priced service. और इसमें upside भी अगर आपका है, yeah, right. So now I am incentivized to create some kind of an upside for him because now the risk is with me. Right. ये बहुत seamless हो जाता है इसमें. आप, it is not just about the numbers, the effort that is involved to sell an old home and then buy a new home, yeah, takes a lot out of a customer. तो we feel कि हमारा जो प्रोडक्ट है ये win-win है कस्टमर के लिए. Customer does not lose in any scenario once they sign up with us, right? And that is our endeavor, right? Beautiful. So the customers we work with have found this to be a very, very, very attractive value proposition. In hindsight, we've had customers who become so emotional about it कि अगर आप नहीं होते तो उस समय नहीं होता था, right? Wow. And that is the value proposition कि आप एक शॉट में दोनों आपकी जर्नीज खत्म कर रहे हो. लीगल पेपरवर्क प्रोसेस वी ऑब्वियसली गाइड देम थ्रू इट. वो तो किसी भी ट्रांजैक्शन में होता है, बट विदाउट दी अनसर्टेनिटी राइडिंग ऑन योर हेड कि ये ट्रांजैक्शन होगा कि नहीं, एंड फिर नया वाला मैं खरीद पाऊंगा कि नहीं, वो सीमलेसली. वी हैव कस्टमर्स हु डन बोथ एंड्स ऑफ द ट्रांजैक्शन इन 5 days एंड दे आर डन. नाउ द हेडेक इज विद मी, राइट. सो दैट इज द पावर ऑफ दिस प्रोडक्ट, दैट इज द कस्टमर जर्नी, राइट. फिर वो इवेंचुअली मार्केट में 4 महीने बाद बिक जाएगा या फिर हम ले लेंगे, राइट. दोनों में से एक चीज होनी, बट उसकी रिस्क खत्म हो जाती है जिस दिन हम उसको ऑफर देते हैं. ब्यूटीफुल यार. सो मेरा एक क्वेश्चन ये है, जो आपने अभी जब बताया तो मुझे लगा कि जब आप कस्टमर से मिलते हैं तो आई एम प्रीटी श्योर कस्टमर्स को कन्विंस करना भी बहुत मेहनत का काम होगा. बिकॉज मैं जैसा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऑप्शंस रखने पसंद है, राइट. सो आई गो टू यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से क्या हो सकता है और यहाँ से क्या हो सकता है. तो इन तरह के जो सिनारियोज हैं उसको हाउ डू यू डील? डू यू ऑफन कम अक्रॉस दिस सिनारियोज वेयर कस्टमर्स आर लाइक कि नहीं सर हमें तो उन्होंने इतना बोला, right? How do you deal with it? What is the approach towards it? So the beauty of our product, Govind, is कि अगर किसी को और भी upside, उनको confidence है कि we've had customers who got on the offer after we gone into the transaction with them, right? कि यार मुझे upside चाहिए तो मैं भागता हूँ उसके लिए. Once the financial closure is done, वो उनका motivation है, right? True that. But we do share with the customers that what we give is very close to fair values, right? And sometimes when they are thinking so opportunistically, उस समय लगता है कि यार मैं तो सब, आपने जैसे बोला कि मुझे तो सारे ऑप्शंस रखने, राइट. पर जब आप नए घर की जर्नी कर रहे होते हैं या आपको लिक्विडिटी उस समय किसी और काम के लिए चाहिए होती है, राइट, उसकी वैल्यू उस समय है.
Right? Bilkul. And we found in our limited short experience that we've seen a lot of customers lose out of the opportunity of the new home because the optionality बहुत सारी देख रहे थे, right? Beautiful. And I think it's a consumer journey where people will know that what HomeXchange offers or brings to the table is fair, transparent, and will create an opportunity for the customer to win again because of our structure. Okay. So we try and convince as many customers. Obviously, some customers are very, insistent on keeping that optionality. So be it, it's a journey. थोड़ा धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे. When you take a city like Bangalore, people have a lot more data in their hand, so they are very convinced. So the decision is very quick. Absolutely. Bombay is an older city where transactions have happened in a certain way, customer journey is happening in a certain way. So that is part of our evolution, right? But काफी customers immediately समझ जाते हैं. The fact of the matter is optionality इसलिए रखते हैं क्योंकि वो काफी time से try कर रहे होते हैं. और price बहुत clear नहीं होते mind में. बिल्कुल. Right? Which is itself not a good thing for them, right? True. जो आपने कहा लिक्विडिटी का आपका जो क्या मैं इसको एक आपके बिजनेस का मोड बुला सकता हूँ अभी के लिए कि ये मुझे सही बात लगी कि मैं जब घर खरीदने जा रहा हूँ नया उस टाइम पे मुझे अगर पुराना घर बेचना है तो मुझे पैसे चाहिए और आप ये लिक्विडिटी अगर अवेलेबल करा रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरा डिसीजन आपके फेवर में बदलेगा. बट मुझे अब ये जानना है आपसे कि व्हाट इज द extent of this help of liquidity I can expect from you if I am a customer of yours. We customize it to what their needs are. So suppose मुझे 20% डाउन पेमेंट करना है मेरे पास 5% ही है. Right. तो क्या 15% तक Sure. Our customer and different customers have given us different viewpoints. Some customers said I actually just need this off my head so that I can make the new home decision. In my mind they're squared off, right? मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए पैसा आप initially इतना ही दे दो बाकी मैं दे दूँगा. Right? Yeah, if it's an under construction project where investor is getting out of his current investment to the new one and वहाँ 30% you have, please put up 15%, we add 15% to it. तो वो एक customization हम लोग जरूर करते हैं. Right. हर एक की नीड अलग है, कहाँ खरीद रहे हैं उसके हिसाब से नीड अलग है. Obviously, that is a powerful mode, but the even more powerful mode is the fact that we provide this service on a guaranteed price. And upside रखा उसमें 15% फंड किया 10% फंड किया. We had customers who said just give me the guarantee, a small token and let's start the journey. मुझे immediately पैसा नहीं चाहिए, right? So it depends on the situation. Definitely most cases are the liquidity is part of the challenge in the industry कि चलो बिक तो गया कई बार आपने बेच भी दिया घर. वो जो नया बायर है वो बोलता सर 1 महीना और दूंगा 1 महीना और लेता हूँ because उनके भी आगे कोई शायद घर बेच रहे हैं जो नहीं बिक रहा. We had so many situations where customers have said कि हाँ मेरे पास बायर बट उसका आगे का घर नहीं बिक रहा था. So it has a domino effect. So we are saying that let's reverse the domino effect in a way कि हमने certainty यहाँ create की तो आगे और certainty फैल रही है, right? बिल्कुल. So that is definitely the moat as well. Absolutely. While breaking down your business model, ये मुझे पहले भी query आई है but जब अभी आपने बोला तो I thought कि I can take the liberty to ask this question to you. My question is pretty simple. ये liquidity that you are providing, if you do not mind telling, it is okay. But इसके दो चीज मुझे दिखते हैं. ये liquidity, how are you financing it? If you do not mind telling us. Second is, do you see कि कल को there could be a scenario where you have too much of inventory overhang because of this, and can it be a problem for the whole business model? Right. No, I think that is exactly our competitive mode. You asked me about the mode. Yeah. The fact of the matter is, if I am not being able to price a home with our kind of DNAs and risk backgrounds, right, where it has to move in 3 to 4 months, right, which is our targeted time period, and that's how we price a home. We do see sometimes transactions and we find a deep search in the market. It took 18 months to sell that home at that price, right? Right. Then 18 months for us is not a time period within which a price is discovered. True. A price discovery for stock markets is instantaneously. In real estate, a reasonable time, right? Absolutely. So our starting point of our discipline is this the price at which this home will move in 3 to 4 months? Got it. You will have a risk of inventory getting piled up in your system. Yeah. If you price the homes wrong, got right? It. Or you've not figured out कि sell कैसे होता है, right? And that is when. So far we've not had that. We've been our teams have been very hardworking. We are very entrenched. We do hit our target of selling the home in our desired time period. And part of it is a early discipline that we go while going in, right? We have it put in place.
So that is a strategic mode because that is what we are supposed to perform in the ecosystem. Okay, so Jesal, next question is our trademark question that I thought that I want to keep it in this series. Okay, this is just because I wanted everybody to know. So I expect that a lot of customers, brokers and जो entrepreneur बनना चाहते हैं उनके लिए ये जो हमारे सेशंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट होंगे. एंड उसके लिए ये क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया जिसमें इट्स वेरी सिंपल फॉर्मेट यू हैव टू आंसर कि अगर होम एक्सचेंज इज वन पर्सन तो टेक अस टू द जर्नी ऑफ दैट वन पर्सन इन अ डे कि आपके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं क्या है पर लेकिन वो सब एक ही बंदा आज कर रहा है. यू आर स्टार्टिंग एंड जेसल इज वन पर्सन इन द होल कंपनी. ओके, व्हाट ऑल ही हैज टू डू टू मेक श्योर दैट यू डिलीवर्ड ऑन द प्रॉमिस दैट यू हैव केप्ट इन योर माइंड. तो गोविंद, इट स्टार्ट्स विद द कस्टमर. कस्टमर कहीं से भी आ सकता है. राइट. तो जेसल को जाके या होम एक्सचेंज को जाके पहले तो डेवलपर्स के साथ बात करनी है. बिल्कुल. मार्केट में जाके कस्टमर से बात करनी है. राइट. लेट्स से कस्टमर आ गया है जो डेवलपर के यहाँ अपग्रेड करना चाहता है. बिल्कुल. सबसे पहले वो उसकी जर्नी शुरू करेगा. बिल्कुल. उसके घर को इवैल्यूएट करेगा, उसके नए घर की नीड को इवैल्यूएट करेगा. राइट. फिर वो जर्नी हमारे शायद एक स्टेप पहले मैं उसके जाऊँ तो वो जर्नी शुरू होती है कि हम मार्केटिंग भी करते हैं. राइट. तो पहले तो उसको जाके रीच करना है कस्टमर को, कहाँ पर बैठा हुआ है कस्टमर. बिल्कुल. वो एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है इसमें. राइट. और फिर उसको हमारे जो कंज्यूमर केयर से लेके रिलेशनशिप मैनेजर की एक जर्नी है उसकी पूरी वो जर्नी कंप्लीट करा के उसको होम विजिट करा के हमें उसके नए घर की जर्नी की तरफ जाना. Jesal will go on to the home visit of every site that the customer has to go to for so typically आपके पास जो कस्टमर आ रहे हैं वो आपको बता रहे हैं कि मुझे यहाँ पे सेकंड घर लेना है या वो जर्नी भी आप ही उनके साथ ट्रैवल करनी है. वो जर्नी डिपेंड करती है. कई बार कस्टमर श्योर है कि मुझे यहीं पे खरीदना है, कई बार 3 ऑप्शंस है तो उसके साथ वो जर्नी भी करनी है. और उसका जो पुराना घर की जर्नी है अगर वो हमारे क्राइटेरिया में फिट होता है तो वो जर्नी भी करनी है हमें कि उसके घर को इवैल्यूएट करना है, उसको ऑफर देना है. वो 1 दिन के अंदर देना है, ऑब्वियसली हम 5 दिन में देते हैं. दूसरी तरफ ये जो कंज्यूमर का एक्सपीरियंस है हमारे फ्लो के थ्रू ये ब्रेक नहीं होना चाहिए. कंज्यूमर को टाइमली बेसिस पे कस्टमर केयर से, रिलेशनशिप मैनेजर से, होम विजिट से ऑफर देना है. Right. और उसके बाद अगर उसने ऑफर एक्सेप्ट कर दिया तो उसका सारा पेपर वर्क, लीगल प्रोसेसिंग ये सब करना है और उसको फिर फंडिंग भी कराना है उसका. राइट. तो ये भी एक टास्क हो गया और ये सब प्रोसेसेस हम लोग होल्ड टुगेदर कर रहे हैं. हमारा एक टेक का प्लेटफॉर्म जो हमने बनाया है. Right. तो वी हैव टू मेक श्योर कि कहीं पे टेक का प्लेटफॉर्म ब्रेक नहीं हो रहा है. नया प्रोडक्ट क्या बना है कस्टमर के लिए, उस जर्नी में हम कहाँ आगे बढ़े. राइट. और ये सब करने के बाद वापस एक कस्टमर को रीच करना है कि हमने कस्टमर को कैसे फुलफिल किया है. एंड नॉट जस्ट अ स्पेसिफिक कस्टमर, वापस एक ब्रांडिंग और मार्केटिंग का एंगल लेके जितने ज्यादा कस्टमर्स के पास पहुंच सकते हैं वो सब करना है. राइट. तो जर्नी स्टार्ट्स कंज्यूमर साइड से बट उसके लिए मार्केटिंग जरूरी है. मार्केटिंग के लिए टेक जरूरी है. बिल्कुल. टेक के लिए ऑब्वियसली इट इज आल्सो पीपल मैनेजमेंट. जब आप इतने सारे लोगों की बात करेंगे तो डे टू डे बेसिस पे यू आर आल्सो मैनेजिंग पीपल. राइट. एंड कल्चर. राइट. एट द एंड ऑफ द डे व्हाट वी कैन शो आउटसाइड वर्ल्ड इज व्हाट वी विल हैव टू बिल्ड इनसाइड. राइट. बिल्कुल. तो वो जो हमारा कल्चर और ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी है वो इंटरनली भी होना चाहिए और एक्सटर्नली भी होना चाहिए. राइट. तो द जर्नी इज वेरी मल्टीफैसेटेड. अगर एक दिन में करनी है, आपने सवाल पूछा एक दिन का, लेकिन एक दिन में ये होता नहीं है. बिल्कुल. बिकॉज रियल एस्टेट, वन थिंग दैट आई विल टेल पीपल इज दैट रियल एस्टेट इज अ लॉन्ग टर्म गेम. एब्सोल्युटली. विनिंग ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस इज अ लॉन्ग टर्म. एक ट्रांजैक्शन से नहीं होता है, दूसरे ट्रांजैक्शन यू हैव टू काइंड ऑफ गो थ्रू द जर्नी एंड देन सडनली बिकम्स कि इट्स अ वायबल वे ऑफ डूइंग बिजनेस. राइट. तो एक दिन की जर्नी काफी कॉम्प्लेक्स है बट रियल एस्टेट में इट्स अ मल्टी ईयर गेम. Absolutely. So to the viewers, I wanted to tell you this is a very complex affair. इतने सारे इंजन एक साथ काम कर रहे हैं to make sure आपका जो सपनों का घर है आप तक पहुंचा सके ये लोग. राइट. I was going through an interview of Ashneer Gora. उनसे पूछा गया कि उनका बिजनेस क्या है. उन्होंने कहा मेरा बिजनेस कुछ नहीं है, जो भी शॉपकीपर्स हैं या मर्चेंट्स हैं उनके यहाँ जाके QR कोड लगाना है. राइट. And that is the reason they can scale their business faster. And their business is $1 billion opportunity as well, and that they have achieved. But this is also a very important phenomena we need to understand कि घर आप जो खरीद रहे हैं उसको केवल बनाने में ही नहीं, आप तक पहुंचाने में भी, मार्केटिंग करने में और उसका सेल्स करने में भी बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो आप नोटिस नहीं कर रहे हैं. जो मैंने समझा जैसा, सो आपका एक लेयर है जो कस्टमर एक्सपीरियंस के ऊपर ध्यान दे रहा है, कॉल सेंटर टू रिलेशनशिप मैनेजर, देन मेकिंग श्योर द क्लोजिंग हैपन एंड देन उसकी सारी फाइनेंशियल और लीगैलिटीज को
or I believe home loans also becoming a part of your process only. Then there is a backend जहाँ पे एक टेक्नोलॉजी आपकी आई जो एक वायर कर रही है आपको आपके मार्केट प्लेस को, जहाँ पे लोग इन्वेंट्री आपकी देख सके, एक है जो आपके प्रोसेसेस को, और एक आपका जो प्राइस डिस्कवरी सिस्टम है उसको भी। तो ये सारी चीजें एक साथ मिलकर होम एक्सचेंज। तो आई विल टेल यू गोविंद कि ये खत्म नहीं होता है वहाँ पर। अब इसका पुराना घर आ गया है, अब मुझे मार्केट में जाके वो बेचना है, राइट? तो हम वो वाला प्रोसेस भी रन कर रहे हैं, हम लोग ब्रोकर्स के साथ बात कर रहे हैं, हम लोग डिजिटल टूल्स भी यूज कर रहे हैं, जहाँ हम लोग कस्टमर्स को रीच कर रहे हैं। बेंगलोर जैसे शहर में कस्टमर्स आर कमिंग टू अस डायरेक्टली, राइट? आपने 99 एकर्स मैजिक ब्रिक्स की बात की, हम लोग वो टूल्स भी यूज करते हैं। डन द राइट वे, द इकोसिस्टम इज बिल्डिंग itself well around it, right? तो ये एक और टास्क है जो इकोसिस्टम में हम बात कर रहे हैं। आपने अश्लील गोबर की बात की, तो those are very different kinds of product. Yeah, absolutely. They are smaller ticket sizes. This is one of the biggest investment decision that or asset that a customer holds in his entire life, right? तो इसकी जो जर्नी होती है वो अलग होनी है, definitely. आप अगर खाली जाके वहाँ होम एक्सचेंज लगा दोगे, कोई आने वाला नहीं है। You have to build the trust and confidence over a period of time. मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग काफ़ी इन्वेस्टर से बात करते हैं, काफ़ी लोगों से बात करते हैं, हमारे ऑडिटर्स हैं, हमारे दूसरे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। हमारा जो ऑफिशियल कॉल खत्म हो जाता है उसके बाद किसी न किसी का जरूर मैसेज आता है, यार मेरा भी एक घर है जो मुझे बेच के नया खरीदना है। बिल्कुल। सो इट टचेज एवरी पर्सन इन द पॉपुलेशन, whether we like it or not. And हर दिन एक नया बंदा सो के उठता है और बोलता है कि मुझे मेरा घर बेच के नया लेना है। So the consumer journey is not a repeat, while we've had repeat customers, right? But it touches every person in the population, and it's a big population. Absolutely, absolutely. हम सबको घर चाहिए और नया घर खरीदने के पुराना घर बेचना भी है, and one of the largest transactions, without doubt about that. So with that, I have a very interesting question for you coming next. जो है मेरे Proptech में काम करने वाले मेरे भाइयों के लिए, उनको समझना है यार, आपने फंडिंग उठाई है, ये फंडिंग उठा कैसे रहे? Proptech एज अ इंडस्ट्री, एज अ इकोसिस्टम, अगर मुझे बताना है तो शार्क टैंक यूएस देखो या इंडिया में देखो, नंबर ऑफ रियल एस्टेट स्टार्टअप्स दैट आर फीचर्ड देयर आर एज गुड एज इन सिंगल डिजिट्स। इंडिया में तो अभी आया नहीं कोई भी। ये इसलिए क्योंकि I was having an interaction with their team once and I got to know, उनका एक ही स्टेटमेंट था, रियल एस्टेट है ना एज अ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी सेक्सी नहीं है, राइट? जबकि सबसे बड़ा ट्रांजैक्शन यहाँ पे हो रहा है, एक लाइफ हम जीते हैं एक घर कमाने के लिए, राइट? गाड़ियां हो जाएंगी 2 या 3, पर घर एक कर दिया तो हमें मालूम है यार वी हैव अराइव्ड। व्हाई देयर इज अ डर्थ ऑफ वीसी गेटिंग अट्रैक्टेड टू दिस स्पेस, एंड इन सब के बावजूद यू हैव गॉट सम राइट सेट ऑफ पीपल बैकिंग यू। हाउ डज दैट हैपन? हाउ डिड दैट हैपन? एंड मोर इम्पोर्टेंटली, अगर हमारे जो Proptech एंटरप्रेन्योर्स हैं, what will be 1 or 2 learnings that you can give for them to help them raise money maybe the way you did? No, I take your point, Govind, ki, typically or traditionally VC world has not been very open to ideas of funding Proptech, especially in India. I think US में तो फिर भी काफी traction होता था, especially if it is data based, if it's tech based and software as a service. Even in real estate, you have those kind of companies and they will do well, whether it's in the hospitality management or you've seen some of the plays on asset-like models. Right. I think certainly in the real estate environment is with a little more skin in the game. Right. And this is a much more long-term scalable model, right? True. Question is, a lot of investors may look at investment opportunity as one that can scale. You put this much money and it can scale up this much in the next one. But the real estate में जो problem है scalability की, वो problem scalability की नहीं है, वो stability की problem है, right? You have to be able to stay in the space to be able to scale. True. And you can only stay in the space if you're doing things right. Right. And you're delivering the value, and you're delivering the trust and the transparency, right? True. So I think the other industries are different in that sense. Real asset is a different kind of an emotion, and stability to scalability is the model, right? Versus scalability to not knowing whether stability होगी कि नहीं होगी. True, right? Absolutely. And could you just throw some light on who are the people today who are backing your vision, right? And how did those interactions really went through? वो कैसे हुआ? No, I think as you might be aware, we have Enrock as a shareholder, we have HDFC Capital as a shareholder, we have Oberoi Realty as a shareholder, and they are all large players in the ecosystem. True that. Who also have proven that
trust, transparency, and a long-term vision on the space takes you very far, right? True. And they believe that this is a problem worth solving. Yeah. They know the team's DNA कि this team brings a lot of मेरा एक दिन में मैं क्या काम करता हूँ वो सारी skill sets इस team के अंदर है, right? And with the knowledge that stability will lead to scalability, right? True. And Absolutely. they are themselves believers in that model, right? Absolutely. And so I think that is how we've come. I think you do need to figure out what is your core model. I think कई लोग बोलते हैं कि मैं ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ. Yeah. At least in the initial years, you have to prove what is it that you do well, right? True. Pivoting बहुत क्या होता है, investors का पैसा आता है, अच्छा ये चल नहीं रहा है, उस पे जरा दिमाग लगाओ. Pivoting बहुत जल्दी होने लगती है, right? But the fact of the matter is you have to find the space and find the problem worth solving. Absolutely. Right. So all the Proptech guys, you have understood what it takes to really go about building a brand. Scalability ही important नहीं है, stability भी बहुत important है. Now Proptech entrepreneurs की जब बात चल रही है, तो I'm gonna ask you a question which I'm personally interested in. Name 2 Proptech companies out of India that you are looking forward to collaborate with, or you're looking forward to learn from, or you believe that they're doing something very, very good which you feel great about, and whom you would want to invest, since you mentioned that you are an angel investor yourself. Govind, I'm a small investor, but I think there are some very interesting plays happening. Yeah. Obviously we work with a company called CRE Matrix on the data side. I think the fact of the matter is everyone will have a role to play if they can identify what can they do well in this space, right? True that. We have data that is coming out now. Yeah. This business could not have been set up 12 years back because we did not have the foundation in the industry of data to scale a business like this. आप local area में ये business कर सकते थे. Right. So everyone is doing something or the other that is allowing the industry to kind of scale up and evolve from what and how it used to operate earlier. Right. So obviously companies like CRE Matrix have played a big role in terms of how they are aggregating the data and presenting it. That is useful to me, but that is useful to a customer as well, right? Yeah. Who is looking at the data and making decisions. True that. More than sometimes the discovery platforms as well, right? Absolutely. So that is the real deal. कि क्या कर रहे हैं? It is not an easy job because data comes in a very, very challenging format at times. अलग-अलग states है, Bangalore में अलग तरीके से आता होगा, Bombay में अलग. There's no one size fits all, so they have to go through a lot of rigor and then present it smartly to the customer side. True. And I think that is a foundation for propelling us to the next level. Absolutely. We have also, there's a company called Home Capital, for example, right? Lalit, right? Yeah. You might have heard of it. And they are doing something and they've created a barrier to entry. They have a moat which is not easy to replicate, but they are adding value to increasing the first home transaction in the country, where they provide down payment assistance to customers, which was an unheard of concept, right? Right. Aajkal the fundamental premise is people get eligible for home loans faster than they have savings because income है, लेकिन savings नहीं है, सब खर्च लेते हैं. So home loan तो eligibility हो जाती है, लेकिन down payment देने के लिए पैसा नहीं है. Absolutely. Absolutely. So I think they are doing some phenomenal work, and we've not seen another company like that come through yet. Absolutely. And they are still growing well. So again, they know it's a long-term play, right? Very good. So you can give money to people who you should not be giving money to very fast, and you will then suffer for it. But I think they're doing it in a very calibrated approach. They're building the ecosystem around it. True. So I think a lot of these plays in the long term will suddenly 10 साल बाद आप देखोगे कि अरे ecosystem 15 साल पहले से बदल गया था. True. And honestly, when I came back from the US, that is what I was aspiring for. It took that long, but I think now we are on the path to that. Great. So for all the viewers, Jesal ने 2 companies का नाम लिया, CRE Matrix and Home Capital. Let me tell you, both the founders of the company, which is Abhishek Gupta and Mr. Lalit, both will be featuring into this series. We will be making sure that whenever that link comes in, we will be putting it into our about section. आप वहाँ से link पे click करके उनके भी interviews देख सकते हैं. Jesal, we have come to the last part as I had spoken. मेरे last 2 question है आपके लिए. जो next question है बहुत simple सा है. आप पैसा कैसे बनाते हैं? That's all. Govind, we are a pure fee-based business. Yeah. मैंने आपको पहले बताया था, we charge customer a small fee. Got it. Similarly, on the other side, we charge developers also a small fee because we do provide a service to them in getting a conversion done. Yeah. And the beauty of our product is that in both of this, we've come to a point where we know that this fee is sufficient for us to run this business and scale it up. Right. So it's not very expensive on the market or the ecosystem.
and if we are doing things well, this is how we are making the money, and we are trying to scale this up within this framework. Okay, lovely. So the last question that I have for the day for you is, जो हमारा एक question है सबके लिए कि how do you motivate yourself to wake up in the morning, fight the battle every day, and come back again to the office? What is the motivation factor? Family is the answer, which we all know. We have to go beyond and talk about it. And more importantly, जो business आप run कर रहे हैं, whom are you learning it from? You know, because there's so much to learn all across. There's a lot of content available, but who are the people who are inspiring you? So Govind, family तो नहीं बोलेंगे क्योंकि I think this is a very personal passion, right? True that. At the end of the day, the first thing is I love real estate, right? Got it. I've gone through the ups and downs in this economy with the real estate space, but I believe in it, right? I believe in it because it is a fundamental need of people, and it is a long-term play. Secondly, we believe in the idea. I think being a homeowner myself, I could really relate to this pain point, which is significant. It is a different headache. We are talking about real money of a large scale, right? Right. And if we believe in the model, that has been my motivator to get out and keep doing things the way. And then you find team members in the journey who have the same passion and who believe in this model. I mean, I'll tell you that every single team member of mine who's at a senior level has associated themselves with that vision and sacrificed something to be part of this journey. And that sacrifice means they are equally passionate about it. Absolutely. And that is the single most motivating factor for me every day. That, you know, there are people who are in the office working with me towards a common goal, right? And who are adding, who am I learning from? I'm learning from them on a daily basis. Wow. We learn from the market because everyone is smart enough to absorb what the market is telling you, what the other people are telling you, and that is creating a learning environment that allows us to keep evolving from the time that I thought about how this journey should be when I was with 3 members and today how it is when we are with 35 members, right? Lovely. So that is the single most motivating factor. And then at the end of the day, when you deliver that value proposition to the customer, and we've seen people who have been so delighted that is an obvious motivator, right? That we are doing something right. No, true. So, आपने ये जो बोला ना team, मुझे एक चीज ये जाननी है जो मेरी भी personal curiosity रहती है. How do you motivate them? Like, you know, if you have to address your team members today, what is the vision that you give to them? That one liner which charged up everybody and they are like, you know, chalo आज तोड़ते हैं कुछ फोड़ते हैं. What is that statement that you deliver to them? I think depending on people, you know, in the team, a different message goes to everyone, right? I think everyone's journey is different in terms of how they relate to it, right? For me, the most important is that all my senior team members, I don't have to motivate them. They motivate me. They come up with the ideas. So, in the first instance, they associated with me or with HomeXchange because they believed in that vision. So, we are breathing that vision every single day, right? And so, I don't have to really do much to motivate the team members who are breathing that vision. And I think we are still a small team, so every member through the journey is today breathing that. They hear it in bits and pieces, they hear it in different kind of situations. So I don't necessarily have to motivate. There are times that we have been down, where we have talked about the bigger vision and the bigger picture. There has been a huge learning, right? This is not something that existed in the market, right? So let's say if I'm hiring a young kid from the market who's never seen this approach to a transaction earlier, it requires a little hand-holding to explain to them why this is powerful, right? But once they get it, they do care about it. They care about every lead, every customer, and we want to make sure that we don't let them, suffer because we did not pay attention. So I think they are very well motivated because we are talking about this bigger picture literally every day in the office. True that. So Jesal, let me tell you, last one and a half hour that we have spoken, I really feel great that there is so much of learning that is there. I would have loved to continue doing, we will maybe do it again very soon. And let me tell you, since last conversation of ours to now, I can definitely tell I'm very happy that we are much more open and we have discussed at least all the questions that I had in mind. I've asked it, and anytime you have a question, dear viewers, make sure in the comment section that you write it out to us. In one of my videos in the future, I'd love to answer them by asking those questions to Jesal at a later stage. But for now, this is all that we had for you. We will be coming out with the next episode next week.
next Wednesday. Till then, Tata, see you, and thanks a ton, Jesal, for joining us here. Any last words from your end? No, just thank you so much, Govind, for having us here. And I would also like to thank all the people I work with on a daily basis, including the developer partners who've been very kind enough to support us through changing this journey, because it helps them obviously, but they see the longer term vision. We are working with developers like Dosti, Vadhva, Oberoi, Rustamji, Purvankara, right? And they've been fantastic. And they see that this is the way the market is moving, right? Absolutely. So without doubt, the real estate developers, they are the community which the customers are always, scared about. I don't know, they're running away from them, but the kind of work they're doing, and I'm really glad that you quoted these names. I've been seeing a few of these brands putting your logo onto their branding, and it definitely tells that the kind of need gap that you are serving to them. Yes. Right? The customers who are coming and asking to buy a home with them, but the problem is they can't sell their home that they have currently, and that is where HomeXchange is picking it. That spot and making sure that they deliver the new home to you by making sure that they take the guarantee of selling your existing homes. So this is the promise that HomeXchange has. Make sure that whenever that you have to sell your current home, you reach out to them, and then, as I said, we'll soon meet on the next episode, which is on the coming Wednesday. Thanks a lot, guys.